ETO stands for Equal Access to Opportunity. ETO helps poor kids stay in school, receive vocational or professional college education, and then places them in their first non-subsistence job. Akshara is the first ETO program working hand in hand with the Mahindra United World College. This is the story of Akshara. माझे स्वप्न आहे की मला पायलट व्हायचं आहे. माझं स्वप्न आहे की मला डॉक्टर व्हायचं आहे. माझं स्वप्न आहे की मला कम्प्युटर इंजिनियर व्हायचं आहे. माझं स्वप्न आहे की मी शेतकरी होईन. Usual village morning, but these kids have a dream. They're up to something new. They will go to school in the transportation provided by Akshara, and then they will spend rest of the day studying with the Akshara team at the United World College. There's an enormous number of people in the world who potentially are good enough to come into the United World Colleges and do very well, but never get there because they can't compete in equal terms, because they've been to schools where there's no resources, where there's one teacher for 50, 60 people. And so this Akshara program is vital for us, because what it does is enables us to do something very small in this respect, which is to get the people who live in the locality here and who don't have good schools locally to provide a supplementary educational program where, working together with the teachers in the schools, we hope, bring up the level of education. In order to see these children through to their first good job, the milestones are improvement in current grades, passing statewide 10th class board exam, passing statewide 12th class board exam, getting into a professional or vocational college program, graduating from college, and finally job placement. It's a long road ahead, and challenges are huge, as was apparent from the initial skill assessment. I have to see whether the teachers are really teaching the text. I'm sure, I don't know about your subjects, but I'm not so sure whether teachers are really covering up the whole thing. Nobody has paid attention to them. The teachers have not taken any care, efforts. no efforts. Where there is mugging up, they're better. Where there's conceptual clarity expected, they're not so good. They don't have exposure for experiments. Oh yeah. So we need They don't have lab. They don't have a lab, but they have a sort of, And rooms. yeah, mockery of a lab. But yeah, right. Yeah. Don't you come here? So extra classes will be the help. Now we really need to think about, this is just teaching time actually, but there is time for practicals, there is time for any tests that we are going to take, so that needs to be scheduled separately for the timetable. There's a huge divide between, as you said, urban schools, which tend to be, middling to good, sometimes very good, and rural schools, which are, desperately short of resources, good teachers. So the gap is large. It is growing. I mean, nothing's more evident than us here. I mean, the Aste school is just 3 kilometers, 4 kilometers from where we are. I mean, we are, a first world institution, and unfortunately, the school in the valley needs a lot of supplementary help. I mean, that's a really stark contrast. It could not be starker. And the
And the point of Akshara really is to bridge this gap somehow, taking resources and using resources at a school like ours and allowing a transfer. Using a role reversal exercise where students have the power over the teacher, the children expressed how they feel. We listened. क्यों नहीं किया? पता नहीं था कैसा होमवर्क? आपने हमारा होमवर्क किया? नहीं. क्यों नहीं किया? तुम स्टूडेंट हो या मैं? तुम टीचर हो, हम स्टूडेंट हैं. तुम हमारा होमवर्क करेंगे. नहीं किया. क्यों नहीं किया? बीवी के साथ धक्का मारते हो? हमारा होमवर्क नहीं करते. कल तुम्हारा एग्जाम है. काय का एग्जाम? हमको पता नहीं. तो एग्जाम कुछ लेने का नहीं, क्या मालूम? क्या पढ़ाई करके आना. चल लिख. पागल टीचर है. पढ़ाई करके आना सब लोग. नहीं करेंगे. खत्म होगा, हम घर जाएंगे. तुम कल वापस आना. चल चलो. छुट्टी हो गई. चलो. क्या पागल टीचर. बहुत पिटाई की उसके. पढ़ाई करके आए क्या? नहीं. क्यों? जुआ खेल रहे थे मंदिर में. बहुत मजा आ रही थी. आपको खेलने का क्या? ये लो पेपर. कवा काट खाएगा सच्ची बोल. कवा काट खाएगा. अबे गाना क्यों लिख रहा है? तो उधर बैठना पड़ेगा. स्कूल में स्टूडेंट के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं, तभी हमको लगता है कि हम भी उसको मारे पीटे वाले हुआ हमारा होमवर्क करके लाए. क्या करते हैं टीचर? मारते हैं. लड़की को भी मारते हैं, लड़के को भी मारते हैं. उससे क्या होता है? अगर मारते हैं तो हमारे मन बहुत दुख पहुंचता है. Things are not easy at home. Rekha's mother passed away as her family could not afford medical expenses. Her grief both affects and shapes her dream. क्या हुआ इन्हें? इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है. आप बाहर बैठिए. नर्स, इन्हें दवाई पिला देना. कैसा है मेरा भाई? आपका भाई ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है. हमारे पास पैसा नहीं. तो क्या हुआ? पैसे की कोई चिंता मत कीजिए, हम भी ऐसे थे. आपका भाई ठीक होगा. त्याला पैसे पाहिजे नाही डॉक्टर व्हायचं खूप पैसे लागतात. आपली साधीमध्ये आपली पुढे मिशन क्लास, पुढे शिक्षक ती थोडे पैसे लागू शकतात. This is Milind. क्या पढ़ रहा है? विज्ञान. ये वाला आशिक बनाया. स्कूल में बातें कर रहे थे ना, तो बच्चों ने बताया कि आशिक बनाया गाना है दमदमाना में, इसलिए दिख रहा था. आप यहाँ किसके पास रहते हैं? मैं यहाँ मेरे चाचा जी और चाची जी के पास रहता हूँ. और आपके पिताजी? मेरे पिताजी गुजर गए. वो 11 साल हो गए. कैसे? और उन्होंने फांसी ले ली. Boys still have it easier. रेखा इधर आओ. आई, मुझे पानी दो. रेखा मुझे भी जरा पानी लाओ. लाती हूँ बाबा. जल्दी लाओ. हर वक्त चिल्लाते रहते हो. ये लो. रेखा मुझे चाय लाओ. हे भगवान, ये लोग कब पढ़ाई करने देंगे? जल्दी से लाओ चाय. लाती हूँ. चिल्लाते क्यों हो? ये लीजिए. गुस्सा क्यों करती हो तुम? मुझे पढ़ाई करनी है. तुम क्या करोगे पढ़ाई कर कर? आपको पता है मुझे डॉक्टर बनना है. तुम नई डॉक्टर बनेगी. क्यों? तुम्हारी शादी तय कर ली है. क्या शादी? हाँ, शादी तय कर ली है. नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती. तुम्हारी शादी तय कर ली है. क्या? आज कितनी तारीख? 25 तारीख. आज तुम्हारा रिजल्ट है. हाँ, मैं स्कूल जाने वाली हूँ. तुम स्कूल जाओगी सिर्फ आज ही के दिन. नहीं, मुझे पढ़ना है.